And Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss general anesthesia. जनरल एनेस्थीसिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा आज some basic concepts related to general anesthesia. Here we will go what is general anesthesia and कब हम general anesthesia देते हैं और क्यों देते हैं. Little bit. Here we will go. I will write here general anesthesia. General anesthesia. जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है? एज ऑल नो कि जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि टू एनेस्थाइज द पेशेंट, एनेस्थाइज द होल बॉडी ऑफ द पेशेंट. ये जनरल एनेस्थीसिया ये वो स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया है, रिवर्सिबल और वी कैन से इट द टेम्पररी एंड रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. तो यहाँ पे मैं आप एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखूँगा यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया की. What general anesthesia is actually. So here general anesthesia हम लिखेंगे it is a state of anesthesia that produces, मैं यहाँ पे लिखूँगा ये definition, it is a state of anesthesia, it is a state of anesthesia that produces a generalized also reversible and also temporary depression. We can also write here loss of consciousness, but temporary depression of CNS, central nervous system, such that क्यों temporary depression of CNS करते हैं हम, such that perception of all senses is removed. Perception of all sense is removed. हम ये भी लिख सकते हैं कि सच दैट so that we can perform the procedure or surgery without any painful stimulus. इसके लिए हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं. सो जनरल एनेस्थीसिया क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया, वो स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया है दैट प्रोड्यूसेस ए जनरलाइज्ड मीन्स होल बॉडी, रिवर्सिबल है एंड टेम्पररी डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सच दैट परसेप्शन ऑफ ऑल सेंसेस इज रिमूव्ड. अब जनरल एनेस्थीसिया हम देते हैं इसलिए कि ताकि हम जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी सर्जरी होगी, वो हम कर पाएंगे विदाउट एनी पेनफुल स्टिमुलस. पेशेंट को कोई भी पेनफुल स्टिमुलस फील नहीं होगा. सो जनरल एनेस्थीसिया के जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है जिसकी बिना पे हम जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं, कुछ एक दो मेन प्रिंसिपल हैं जनरल एनेस्थीसिया के, जिसमें नंबर फर्स्ट पे आता है कि इससे क्या होता है, ये मिनिमाइज करता है harmful direct or indirect effects of anesthetic agents. Or during general anesthesia we can sustain physiologic homeostasis, and the third one is it improves the post-operative outcome general anesthesia. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंसिपल ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जनरल एनेस्थीसिया के बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, शॉर्ट में लिखूंगा मैं GA. नंबर 1, इट मिनिमाइजिंग द potentially harmful direct and indirect effects of anesthetic agents. And the second principle, इससे क्या होता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनिंग
physiologic homeostasis during the whole procedure, or we can say during the surgical procedure. Third, general anesthesia improves post-operative outcome. Improves post-operative outcome. So these three are the basic and main principles of general anesthesia. So principles of general anesthesia: it minimizes potentially harmful direct and indirect effects of anesthetic agents, sustaining physiologic homeostasis during the whole surgical procedures, and it helps in improving the post-operative outcome. Now coming on the second point, कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया के कुछ मेन कंपोनेंट्स, गोल्स है जो हम अचीव करते हैं, जो हमें अचीव करने होते हैं, एंड जब वो हमें अचीव हो जाएंगे, सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट द पेशेंट इज़ इन जनरल एनेस्थीसिया. वो 6 कंपोनेंट्स क्या है मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मैं रफ करूँगा यहाँ पे. components or goals of general anesthesia. Second point, components of, or we can say goals of general anesthesia. These are the most important components of general anesthesia. अगर वो हमें अचीव नहीं होंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि पेशेंट इज इन जनरल एनेस्थीसिया. हम नहीं कह सकते. When we achieve these components, these goals of general anesthesia, at that very moment we can say that patient is in the state of general anesthesia. नंबर फर्स्ट पे आता है hypnosis, which means loss of consciousness. And the second one is amnesia. We can say it loss of memory. Third one, analgesia. We can say pain relief or loss of perception of pain. Fourth one, immobility, loss of motor reflex. Fifth one, muscle relaxation, skeletal muscle relaxation. And sixth one, patient safety. These are the 6 components of general anesthesia. Main components and goals of general anesthesia. When we achieve these components, at that time we say that patient is in general anesthesia. But the question is here कि ये 6 के 6 components हम एक सिंगल एनेस्थेटिक एजेंट से गैन नहीं कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते हैं. सो वो यूज़ मल्टीपल एनेस्थेटिक ड्रग्स, तब जाके हम ये 6 के 6 गोल्स अचीव करते हैं. So when we use multiple drugs and achieving these 6 components or goals at that time and at that stage of general anesthesia, we say that the patient is in balanced anesthesia. We call that state balanced anesthesia. Balanced anesthesia क्या होता है? When we use multiple anesthetic drugs in general anesthesia and achieve these 6 components, and that state of general anesthesia is called balanced anesthesia. समझ आई बात? So that state of general anesthesia is known as balanced anesthesia, क्योंकि उसमें हम everything balance करते हैं. ठीक है.
So when we achieve these 6 components in general anesthesia, we achieve these 6 components by using multiple anesthetic drugs. At that time, that state of general anesthesia is known as balanced anesthesia. And the हो गए 2 points. Third point in general anesthesia was stages of general anesthesia. Stages of general anesthesia. Stages of general anesthesia. Stages of general anesthesia हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके शेयर करो एंड कमेंट में मुझे बताना वीडियो कैसा लगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एंड जनरल एनेस्थीसिया क्लासिफिकेशन, एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम.